Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. It is a great pleasure to come once again live with all of you. Why? Because on 6th of December, the entire country took the examination of UGC NET. And actually, it was a great happy moment and a great surprise with happiness that the examination was actually moderate, neither too tough, neither too simple, as it should be. Earlier, examinations used to be very tough, but now I have seen in the last few exams, they are actually coming into the moderate level, and that is also good for the UGC NET aspirants क्योंकि इसका जो syllabus होता है that is actually a wide ocean which we try to cover with our students from Unit 1 to Unit 10. आज का जो सेशन है why it is important because I'm going to teach you certain important key terms and concepts which would be very important as a scholar of English literature as well as for the next examinations which are going to be lined up for NET, for SET, for different literature panels in the entire country. And I'm very much sure students, you must not have been knowing all these things. So just like the channel, subscribe the channel and share the link today immediately to those students, to that group, to that WhatsApp, Facebook, so that they may not miss this lecture. And once again, I will bless all the students of the entire country on behalf of OSN Academy and the staff and the technical people who have been so helping to all my students, whether they are studying in the offline mode or online mode. And to tell you in brief that the students who wish to be a part of my offline classes for 2024 June, they may contact at the given WhatsApp number immediately. The offline class is going to start from 15th of December. And those who want to join the bilingual batch, now the bilingual batch is in two modes. The one is the classes, the second is the combo. Combo always means the study material hard copy inclusive. So on the screen, you can see that there are so many batches which are in the application of OSN Academy. On the screen, you will see the combo course bilingual. That is the classes plus study material. Now, you can see the other batches also. Fine. Onkar Nath. Hi Onkar Nath, कैसे हैं आप? तो जल्दी बच्चों लाइव आ जाइए. And yes, don't at all ever play with your precious time. If you are in MA previous, first semester or second semester, that is the best time suited to understand and to start with your preparation because you are eligible when you are in the second semester of MA and MA course is actually 10 to 15% of NET. That is why it is always very important to understand the value of time, the value of knowledge and the value of that knowledge which has the expertise of NET. Otherwise, English literature तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, गाइड से पढ़ते हैं, YouTube चैनल से पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं, but they are not able to make their career. So understand this thing very justified that as I am teaching past 25 years, so it is advisable to follow this experience and expertise. और ये बहुत खुशी की बात है कि जो 6 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें लगभग 60 से 70% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे वो सब कुछ हमारे क्लास और कंटेंट या क्रैश बुक या टेस्ट सीरीज से ही आए थे. So that is nothing but experience and expertise. Your study material, sir, is expensive. No, my dear Onkar Nath, it is very precious and it is the least price in the entire country. Why? Because I have been helping the poorest of the students in India. मेरे ख्याल से आपको ओंकार नाथ किसी न किसी चीज़ की कोई गलत फहमी हो गई है. The given number is given there. You can contact the executive and ask for the prices and whatever help is possible, I will surely give you. Now start with the key terms and concepts. Fine. So now, the first key term and concept which I am going to teach is abjection. I am going to rub these. I have written because I am going to teach all these. The first is abjection. Now, what is abjection? This term, have you ever heard this name?
Have you ever read this term? Can anybody tell me that yes sir, I have known about abjection? This term actually, my dear students, come from the Latin. Latin समझते हैं ना, ये Latin term से आया है abjecto, abjecto. It has come from the Latin word abjecto, which means to throw under or move under. To throw under or move under. To be abject, abjection बना है abject से, ये देखिए. To be abject is to be subordinate. अगर abject मतलब क्या होता है? You are subordinate, you are inferior. To feel an attitude of shame and to feel an attitude of worthlessness. Now, the important thing which I am going to teach with the net eccentric angle is that this term abjection is associated with whom? अगर कोई पूछ ले आपसे कि बच्चों क्लास में एग्जाम में कि दिस टर्म abjection is associated with name, और उसमें नाम लिखा हो, मान लीजिए माइकल फोकू, क्रिस्टीलिया, जूलिया क्रिस्टीवा, होमी भाभा एंड सम अदर्स, किसका नाम देंगे? दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद जूलिया क्रिस्टीवाज, जूलिया क्रिस्टीवाज. This term is associated with Julia Kristeva's version of psychoanalysis. Version of psychoanalysis. अब आपको ध्यान होगा कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे. And this Julia Kristeva's version of psychoanalysis, which actually focuses on the pre-Oedipal phase. The pre-Oedipal phase. It is the pre-Oedipal phase. Oedipal आप जानते होंगे, OEDIPL, Oedipus complex से बना है. The pre-Oedipal phase, when the baby, जो बच्चा होता है, is still undifferentiated from its environment and its mother's body. So कह सकते हैं कि abjection is actually the civilized response to anything that reminds us of the drives, of the desires we have thrown into the unconscious through repression during the Oedipal phase of development. तो जो मैंने आपको डिटेल बताया है ना स्टूडेंट्स, ये अपने आप में काफ़ी है. इतना भी शायद आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा. सो कैसा लगा बच्चों? आपको ये समझ में आया? एकदम इजी तरीके से समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए कि यस सर, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड. So this is abjection, which I have tried to explain you in a very easy terms and easy language, so that now you don't forget what is abjection. जैसा कि शुरू में आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखा था. तो जो मेरा दूसरा टर्म पढ़ाने का था वो है एब्सेंस ऑब्लिक प्रेजेंस. कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज एब्सेंस एंड व्हाट इज प्रेजेंस? ये है क्या? दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से वन ऑफ द प्राइमरी बाइनरी अपोजिशंस. इट इज वन ऑफ द primary binary oppositions. Primary binary oppositions. It is one of the primary binary oppositions analyzed by, ये पूछा जा सकता है किसने इसको एनालाइज किया है और ये कहाँ पाया जाता है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस. तो आप तुरंत बता देंगे, या आपको याद होगा कि सर ने पढ़ाया था बाय जैक्स डेरिडा, by Jacques Derrida in, कहां पर? in of grammatology, of
grammatology. And the idea of presence, the idea of presence refers back to a binary opposition examined by Plato, whose associated speech and speaking with presence and writing with absence. Since you can understand a piece of writing exists separately from its writer, who need not to be present for the writing to exist or to read. So, जो डेरिडा है ना, वो आर्ग्यू करता है that all the systems desire full presence to have, you can say, to have the stability and to be able to account for everything within the system. And full presence is a characteristic of the system of a system. So that is too much to understand what is absence and presence. Fine? Clear यहाँ पे हो गया आपको? Now, the third topic which I have written to make you understand is alienation. What is alienation? Random shorts. Hello random. कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? What's your name and which city you belong to? और बच्चों ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो हम UGC नेट का एग्ज़ाम 6 तारीख को था, उसके बाद मैं पहला लाइव लेक्चर ले रहा हूँ. हो सकता है कि ये लेक्चर आपको कठिन लगे, लेकिन कठिन और सरल से कभी मत डरिएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो सिर्फ कंटेंट पढ़ाता हूँ. नो एंटरटेनमेंट, नो ग्लैमर, nothing in my YouTube channel, because I only believe in time, I only believe in content, I only believe in career formation. And as a professor in English literature since 1998, it has been my vision and mission to make you, to give you the best possible so that you may be able to make your future intact and to grow yourself with great knowledge. Okay, you are Nitin. दिल्ली से आप बोल रहे हैं. ओके नितिन, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तब तक आप लिखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे. अब देखिए, ये एलिनेशन की बात करें अगर हम, तो एज अ जनरल कॉन्सेप्ट एलिनेशन का मतलब होता है, वेरी सिंपल, एलियन लिख सकते हैं, समथिंग ऐसा वर्ड लिख सकते हैं, फॉरेन लिख सकते हैं, और स्ट्रेंज लिख सकते हैं. ये सब सिनोनिम्स हो सकते हैं टू समथिंग और समवन. फिर लिख सकते हैं एलिनेशन ऑफ अफेक्शन, एलिनेशन ऑफ अफेक्शन. ये क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा. Alienation of affection is actually a legal term. ये एक लीगल टर्म है used to describe a situation. एक ऐसी सिचुएशन जब आती है जब someone stops loving someone else. When someone stops loving someone else. ये शायद आप लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसा होता हो. तो आप, चूंकि ये प्यार यहाँ पे आ गया है, तो प्यार की परिभाषा, या जब प्यार को अभी जब हम डिस्कस करते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि ये इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. एम आई राइट? तो कहीं न कहीं, कभी न कभी आप लोग भी जिंदगी में एलिनेटेड फील किए होंगे. सर टीचिंग के अलावा कोई जॉब मिलती है यूजीसी से? नो नितिन, यूजीसी क्वालिफाई करने के बाद यू ओनली गेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, विच इज़ द बेस्ट, I think the most sought after job in our country, the most respected. And this term alienation is employed frequently. इसका इस्तेमाल बहुत frequent होता है students. कहाँ पे? In existential philosophy. कहाँ होता है? In अस्तित्ववाद, existential
philosophy. The term is employed frequently in existential philosophy and writing. Why? To express the fundamental human alienation from paradise. जैसे कोई टाइटल है, मान लीजिए, लाइक स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड, और कोई टॉपिक है, मान लीजिए, इनविजिबल मैन. तो स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड एंड इनविजिबल मैन बोथ आर एक्सप्रेसिंग दिस सेंस ऑफ एलिनेशन. अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, मार्क्सिज्म आपने पढ़ा होगा, मार्क्सवाद क्या कहता है? इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, alienation has a more specific meaning, referring to the way that a capitalist economic system forces workers who produce things to feel that they do not have any rights of ownership to the things they produce. जो वो पैदा कर रहे हैं उसका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. इसीलिए कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं, they are thus alienated. क्योंकि उनका अधिकार नहीं है, इसलिए दे आर एक्चुअली एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर. जो मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, वही प्रोडक्ट उन्हीं का नहीं है. जैसे कोई बिल्डिंग बना दिया, 7 स्टार 5 स्टार होटल, कोई बिल्डिंग बनी है, जिस लेबर से बनी है, वो लेबर का एक गज जमीन उसमें नहीं है. They are also alienated from their labor itself, which becomes something they trade for money rather than something they can find satisfaction in itself. कितनी बड़ी बात है ये, देखिए, alienation की. Understood alienation? अमर सिंह, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ले लेंगे. अभी आई एम टीचिंग समथिंग एल्स एंड आई हैव टॉट अमर सिंह दीज टू इन माय क्लास. यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अमर सिंह माय पेड क्लास. in that cultural studies and cultural theory and that unit, I have taught structuralism and post-structuralism in proper detail. Fine. तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? How much you are liking this class? ये क्लास कठिन थोड़ा जरूर है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको हमें बताएं तो मैं आगे बढ़ूं, या अगर आपको बहुत कठिन लग रहा है तो मैं रहने दूं. और जो बच्चे भी नए लाइव आए होंगे उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि 6 दिसंबर के बाद आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं फिर से आपके सामने. 2024 में जून का जो एग्ज़ाम होगा, दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा 24 में, 6 महीने के अंतराल पे, उसके लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं. यूपी का टीजीटी पीजीटी का बैच बाइलिंगुअल भी लॉन्च हो गया है, महाराष्ट्र सेट भी लॉन्च हो गया है, केसेट भी लॉन्च है, और यस उत्तराखंड सेट. हम अपने टेक्निकल टीम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को एक बार सभी का वो स्क्रीनशॉट्स या थंबनेल दिखा दें, जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि ऐप डाउनलोड होने पे क्या क्या चीज़ें अंदर हैं. एक बार सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है OSN Academy का, एंड यू विल फाइंड द एंटायर वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इनसाइड, with study material, with test series, with everything. And yes, you can get everything at your step. You have to only WhatsApp us your number and ask our executive for all help, for all counseling, for any examination concerned with literature and the study material. सो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब लेक्चर्स के लिए आते रहिए हमारे पास. आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों, और इसी सेशन को हम सेकंड पार्ट ले चलेंगे, क्योंकि अब हमारी है IAS की क्लास पेड बैच में, उसका टाइम हो रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. एंड यस, आई होप यू विल स्टडी गुड एंड गिव अस दिस प्रायोरिटी to make yourself a great scholar of English by studying with us, by studying with OSN Academy, and by downloading the application of OSN Academy.